First of all, thank you, Ambassador Sanjay Verma ji, for joining us. And a very interesting development has taken place. The Canadian National Police Chief has said that India has so far, there is no linkage between the Hardeep Singh Nijjar case and any activity of the Indian state and the happenings in Canada. So how do you see this, sir? And you were saying all this, from long time when you were, actually all this happened in front of you when you were serving in Canada. So what is your take now, sir, on this? Navinji, when I look at it, what he said, let's be very clear what he said first. So he has kept it in two different buckets. One bucket is the Khalistan terrorist who was killed there. And another bucket is transnational repression and transnational crimes. So these are two buckets. So when you look at the first bucket, so there court case is already on. Charges have been filed against 4 Indian nationals. These 4 Indian nationals went to Canada as international students. God knows what happened in the society, and they became whatever they have been alleged to have become, and their trial is on. Now the second bucket is India's overall engagement in Canada, and initially, if you recall, when I was still serving in Ottawa, a lot of noise was there on India's role in transnational repression as well as transnational crimes in Canada, which I always said it is not India's policy to interfere in the internal affairs of any other country. Unfortunately, this was not accepted by the regime of that particular point of time. But I'm very glad to see the statement which came out, and what he said was that right now he doesn't see any link with any foreign entity, which includes India, I'm sure, any foreign entity having links with transnational crimes and transnational repression in Canada. So personally, I'm very happy. Personally, I feel that what we all have been advocating for has seen the end of the tunnel, and I hope that this augurs well with the future relationship of India and Canada. So now, in the hindsight, we can say that it was a politically motivated allegations which were hurled on India at that time. We always maintained that. If you recall, both from New Delhi and from Ottawa, the Indian interests, the Indian representation always talked about this. We always said that this is politically motivated. We always said that this is vote bank politics. We always said that there is no evidence available to say so. And we are glad that this is coming true. And finally, they will see India for what it is, a deep civilization, an India which doesn't interfere with any other country's internal affairs. Sir, Justin Trudeau, then Prime Minister of Canada, said there are credible allegations. So, but they have not given any concrete proof, right? So let's try to sort of dissect that. And if we say credible allegations, it was still not evidence. But due to some reason, the then Prime Minister thought it appropriate to state that in their own parliament. I did not consider it well thought of on his part. But then moving ahead, even RCMP in 2024 October said that they have credible evidence linking transnational repression and crime with Indian agents and proxies. Now, even that has failed. Now, my only question to those who had leveled these charges is, if there was such a clinching evidence, why the charges have not been filed so far? So I look it both from the logical point of view as well as from the international law point of view. So it is now clear that Trudeau was declaring it prematurely. I would say he was... Or maliciously. He was ill-advised. The timing was of his choosing, but he was ill-advised to put a very strong bilateral relationship on hold and move ahead with his political, I would say, motives. But sir, this also involved a tip-off from the American counterparts of Canada.
So how do you see this now after this police chief statement? So since we are not a member of Five Eyes, so we really do not know what happened inside. But what Canadian media had quoted some of the officials saying is that they got this information through wiretap from one of the Five Eyes countries. We do not have any inside information on that. So sir, now what next? Where do you see India-Canada relations moving? Because now there's a change in dispensation there. In fact, there was a visit, very important visit recently by Mr. Carney. So how do you see, will there be a paradigm shift now in the approach, in the relationship? See, if you recall, even at that time, what we had been maintaining, that yes, there is a crime committed in Canada. The judicial process should see it through and reach a finality. But this should not allow the bilateral relation to be hostage to this particular episode. Thankfully, the present Prime Minister of Canada, Prime Minister Carney, has been able to see through it. And what he has done, he has not taken off the case from the court, which is going on. So that is still there. But he has moved ahead with other relationship with India, and he had a very successful visit to India, as I see. I don't hold any brief for the government of India. I'm a retired official, a former High Commissioner to Canada. So I'm talking about these things in my personal capacity and not in any official capacity. So if I look at that, a lot of economic collaboration and cooperation has been talked about, but I would still maintain that this is the tip of the iceberg. The convergence between India and Canada is so high that we can look at much better days of bilateral relations in coming years and decades. But this episode has adversely affected the ties? Hugely, hugely. See, this episode had two major impacts. One, on bilateral relation itself, because everything was put on hold. And we were discussing downsizing of missions? Downsizing of mission, EPTA put on hold, early progress trade agreement put on hold, no high-level visits taking place. So bilateral relation was put on hold in a sense. So we lost 2 years. But, so this is one part. Second part is, it has created so much of emotion amongst the two peoples. So Canadians thought that we 6 who have been declared as persona non grata are actually criminals. We are not diplomats. Now that damage to our reputation, that damage to our emotional fabric, who is going to mend that? So everything will be honky-dory. We are soldiers for our country, and we'll take it in a stride. But I always would say that my colleagues have been treated very badly by this Canadian narrative, which I think was falsely created. So do you see it as a diplomatic comeback or diplomatic vindication for India, sir? Not, I would go ahead and call it vindication, but I would say it is diplomatic pragmatism, because finally the realization is that Canada and India have to work together. There is no other option. And when we work together, there will be issues where we will fight. There will be issues on which we see convergences. So those issues on which we see convergences, let's move ahead on that. Those issues where we see lack of unison of our voices, let's discuss, let's talk about it across the table. But let's not call names to each other. And I think we are reaching that situation as far as the governments are concerned, but we will need to work a lot on the emotional aspect of the two peoples. Sir, do you squarely blame Trudeau for what has happened, and he should have acted wisely or more maturely, you say? See, he was the Prime Minister of the country at that point of time. He was the one who spoke about it in the Parliament. So I don't have inside informations, but since he was the Prime Minister of the country at that point of time, everything will fall on him, and I mean that's the end of the tunnel. Thank you, sir. Thank you for throwing light on this. सर, एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, ये जो निज्जर की हत्या का मामला है. पुलिस चीफ ने वहाँ पे बोला है कि ट्रांसनेशनल क्राइम्स में ऐसा दिखता नहीं कि कोई फॉरेन हैंड है. अभी तक का जो नैरेटिव जो सुनने में आया, जिसकी वजह से इनफैक्ट बहुत सारी तकलीफ़ें आई भारत और कनाडा के रिलेशंस में,
ये था कि भारत ने के एजेंट्स को एलेज किया था ट्रूडो ने कि उन्होंने ये हत्या करवाई। तो क्या आपको लगता है कि ये क्लियर एक विंडिकेशन है पुलिस चीफ का ये बोलना कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं दिखती आज की डेट में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो अपनी जो गलती उन्होंने की थी उस समय बगैर किसी एविडेंस के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है और हम इसका स्वागत करते हैं। गलतियां सबों से होती है, सिस्टम से भी होती है, व्यक्तियों से भी होती है, और इन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है तो वो हमारे लिए, भारत और कनाडा के रिश्ते के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो आपको लगता है कि सर अब ये जो केस भारत के खिलाफ बनाया गया था और एलिगेशन लगाए थे, दे फॉलन फ्लैट नाउ? अभी जो उनका स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा इंटरव्यू के दौरान वैसे के प्लॉस के शो में, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि उनके पास अभी इस समय कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे वो यह सिद्ध कर सके कि भारत किसी भी ढंग से कनाडा में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन या ट्रांसनेशनल क्राइम में लिप्त है। और हम लोग शुरू से यही चीज़ कहते आए हैं कि भारत की ये पॉलिसी ही नहीं है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, और आज संभवतः ये उभर कर सामने आ रहा है कि जो हम लोग कह रहे थे वो सही था। तो आपको क्या बड़ी ये डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री दिख रही है, और या आपको लगता है कि अभी इसमें और देखना बाकी होगा आगे? ऐसा है कि ये कम से कम एक सुधार ये कर रहा है कि जो भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंध होने चाहिए उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, मैं आज सरकारी अधिकारी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत और कनाडा के बीच इतने कन्वर्जेंसेस हैं, इतनी समानताएं हैं कि केवल उनको लेकर हम आगे बढ़ें तो पता नहीं यह रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आज कोशिश उसकी करनी है कि उस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएं। आज इसकी कोशिश नहीं करनी है कि एक दूसरे को खरी खोटी सुनाएं और या एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं उसको वो उभारने। बट इसने काफ़ी असर डाला है हमारे संबंधों पे इस वाकया ने। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, देखिए हुआ क्या कि जब ये पार्लियामेंट में जब पुराने प्रधानमंत्री ने, वहाँ के जस्टिन ट्रूडो साहब ने जब ये कहा, उस समय हम लोग अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे थे, और शायद जो मेरा अपना अनुमान है कि अगले 2-3 महीने में वो साइन भी हो जाता। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो जो एक हमारे पास था ओकेजन, वो हम लोग मिस कर गए। ये एक। दूसरा क्या हुआ कि उसके कारण अगले लगभग 2 सालों तक जो आपसी एक वार्तालाप हो सकता था, आपस में एक्सचेंज हो सकता था, विजिट्स का, यात्रा का, कन्वर्सेशन का, डिस्कशन का, वो बंद हो गया। तो लगभग 2 साल तक पूरा ये रिश्ता जो है वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया। और किसी भी 2 बड़ी डेमोक्रेसी के लिए जो एक दूसरे पे निर्भर है, 2 साल अगर रिश्ता बिल्कुल बर्फ की सिल्ली पे चला गया तो आप समझें ये कितना बड़ा नुकसान है दोनों देशों के लिए। लेकिन आज मुझको ये खुशी होती है कि प्रधानमंत्री कार्नी यहाँ आए और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अच्छी मुलाकात हुई, दोनों के बीच बहुत सारे समझौते हुए, और मुख्य मुद्दा ये नहीं था कि एक दूसरे पर हम लोग इल्ज़ाम लगाएं, मुख्य मुद्दा ये था कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी लीडरशिप दिखाई है, और उस लीडरशिप, उस नेतृत्व के कारण मैं ये सोचता हूँ कि भारत और कनाडा का जो रिश्ता है आगे आने वाले वर्षों और दशकों में काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो सर, ट्रूडो ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, आपको क्या लगता है उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, राजनीति थी, या खालिस्तानी एलिमेंट्स को उनको अपीस करना था, वोट बैंक की राजनीति थी, क्या था सर? देखिए, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये राजनीतिक कारणों से किया गया है, और आज भी मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे यह मेंटेन करता हूँ कि राजनीति का उसमें बहुत बड़ा रोल था, और उसी रोल के कारण ये जो मेरे ख्याल से गलत स्टेप लिया गया, जिसके कारण दोनों देशों ने इतना लूज़ किया, इतना सफ़र किया इस पूरे मामले में। तो सर, आपको क्या लगता है आप कुछ सुधार आएगा? और दूसरा मेरा आखिरी सवाल है, आपके पास समय कम है, सुधार आएगा और क्या कनाडा क्या वाकई अब खालिस्तानी एलिमेंट्स को पनाह देनी कम करेगा, या कुछ इसमें हमारी मदद करेगा भारत की? देखिए, ऐसा है कि जिनके खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की, वो आज कनाडा के सिटीजन्स हैं, वो वहाँ के नागरिक हैं। कनाडा उनको किस तरह से डील करता है हम उन्हें ये डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बस एक ही
अपेक्षा है कनाडा से कि वो भारत की संप्रभुता, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इस पे गलत निगाह न डालें। भारत इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए सक्षम है, लेकिन दो मित्रवत देशों के बीच इस तरह के मामले नहीं उभरने चाहिए। वो कनाडा अपने नागरिकों को यह सलाह दे, अपने जो भी उनके नियम कानून हैं उसके तहत उन्हें यह बताने की कोशिश करे कि भारत एक मित्र देश है और उनके नागरिकों का कोई हाथ नहीं होना चाहिए भारत के आंतरिक मामलों में। और भारत की संप्रभुता भारत का आंतरिक मामला है, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भारत का आंतरिक मामला है। अगर उस पर कोई भी गलत निगाह देखता है, भारत सक्षम है उन्हें सबक सिखाने के लिए। धन्यवाद सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, नमस्कार।